Good morning, students. This is 11th June, right? Thursday. I had sent you yesterday link of introduction of acids, bases, and salt. Okay. Hope so you would have gone through that link and you would have understand acids, bases, and salt. Basic idea, you know, acids खट्टे होते हैं, bases bitter, and salt, you know, salt taste. But what are the reaction with acids, bases, and salts with some components, some substances, and how can we identify acids, bases, and salt in scientific term by using litmus paper, and how litmus paper is made up? That everything we will see. Means we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind means imli, yes, girls love that, common salt, sugar, vinegar generally we use apple cider vinegar, and in some Chinese thing also vinegar we use, soyabean chunks बनाने में भी vinegar use करते. So do they have the same taste? This everything has same taste. Sugar का sweet होता है, vinegar का थोड़ा bitter होता है, common salt salty, lemon and tamarind खट्टा, right? So let's recall taste of some edible substances. That is common. Lemon juice. See, 1 2 3 I'll do lemon juice. Taste कैसा होगा? Sour, bitter or any other. So lemon juice का क्या होगा? खट्टा. तो क्या बोल सकते हैं? Sour. Okay. Orange juice. Sour. Vinegar. Bitter. Understood? Bitter taste होता है. Curd का you can say sour. So any other, कोई अदर भी टेस्ट हो सकता है. सो लाइकवाइज यू विल राइट हियर, यू विल फिल दिस. अनरिप मैंगो मतलब कच्चा. कुकुम्बर, यू नो, एनी अदर टेस्ट आएगा उसमें. ग्रेप्स, उसका कैसा होता है? सॉर नहीं होता, बिटर भी नहीं होता, स्वीट होता है, स्वीट टेस्ट होता है. सो लाइकवाइज इसका बिटर होगा. लाइकवाइज यू दिस वन स्वीट. सो लाइकवाइज यू विल आइडेंटिफाई एंड यू विल फिल हियर. अंडरस्टूड? टेस्ट. एनी अदर, तो एनी अदर में अगर आपको पता है स्वीट है देन यू कैन राइट दैट. Acids and bases. First of all, what is acid and what is bases? That I'll tell you. I'll explain. Curd, lemon juice, orange juice, and vinegar taste sour. यहाँ पे already दिया है. The substances taste sour because they contains acid. Means what are acids? These substances. This means the substances. The substances. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो. The substances which has sour taste. Okay. The substances which has a sour taste, they are acid. Simply, the substances which has sour taste, they are acid. Chemical nature of such substance is acidic. वो acid है तो उसको क्या बोलेंगे? उसका chemical nature acidic है. Reactive, acidic, basic. So this one nature को बोलेंगे acidic and they contain acid. That's why they are acidic. Word acid comes from Latin word acer. What's the pronunciation of this? Pronunciation of this Latin word is acer, which means sour. That is Latin word acer, which means sour. The acids in this substances are natural acids. ये natural है. Lemon juice हम बनाते नहीं. This is not man-made. Orange not man-made. So this taste है, that sour taste is natural. Okay, so they are natural acid and the nature of that chemical nature of the such substances is acidic. Okay, what about baking soda? Does it also taste sour? No. If not, what is its taste? Since it does not taste sour, means that is it has no acid. अगर sour taste नहीं है तो उसके अंदर acid नहीं है. But if it is bitter in taste, then it is base, and the nature of base is basic. But ये तो बात हुई कि we can taste. But what about some other substances which we cannot taste? सोप को टेस्ट कर सकते हो. अभी सोप का नेचर कैसा है? एसिडिक, बेसिक. हाउ यू विल आइडेंटिफाई? हाँ, आप सोप को खाओगे? यू विल ईट सोप? नो, इट इज़ यूज्ड इन फॉर बाथिंग, राइट? सो you rub its solution between finger. If you will rub solution between finger, then it feels soppy. सॉपी मतलब कि स्टिकी स्लीपरी. आप सॉप जैसे करते हो तो कैसे स्टिकी स्लीपरी हो जाता है. सो जनरली सब्सटेंसेज लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट, बट इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट, इफ़ यू कैन नॉट ईट दैट सब्सटेंस, देन टचिंग सेंसेशन इट फील्स सॉपी. इट शुड बी बिटर. अगर टेस्ट कर सकते हो तो बिटर होना चाहिए, अदरवाइज इट फील सॉपी इन टचिंग. दिस आर नोन एज बेस एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक. सी, सॉर है तो एसिडिक, बिटर
or it feels soppy on touching, then it is bases and nature of that is basic. Understood? Sour तो acidic, bitter या फिर feels soppy on touching, that are bases and nature of such substance is basic, right? If we can't taste every substance, how do we find its nature? Special type of substance are used to taste whether of a substance is acidic और बेसिक. दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर. ये आपकी हुई फर्स्ट डेफिनेशन. आप ये लिखोगे पहले एसिड क्या है, एसिडिक नेचर क्या है, बेस क्या है, बेसिक नेचर क्या है, एंड देन दिस डेफिनेशन यू आर गोना राइट एंड यू आर गोना फिल दिस टेबल. दैट इज योर होमवर्क ऑफ टुडे. ओके, सो you will have to go through video. How to write this already I spoke. Like that way you will write. Likewise you will write this. You will fill here with pencil only. With pencil. Here indicator. Okay. फोर्थ चैप्टर हीट देखा. Could you measure temperature of human body by touching? Measure means perfectly, हाँ, कि कितना टेम्परेचर सेल्सियस है. यस, नो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई प्रॉपर टेम्परेचर बाय टचिंग और by doing any kind of thing. So for that, what you were using, what we use thermometer, right? We use thermometer. ऐसा कोई डिवाइस होता है, क्लिनिक का थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, राइट? वेदर के लिए थर्मोमीटर होता है. आफ्टर दैट डिजिटल थर्मोमीटर. सो दैट इज़ थर्मोमीटर. सो हियर ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, हम यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं. वाई? to taste whether a substance is acidic or basic. Suppose I am taking soap and I need to check, then I cannot taste it. So what I will do, I will use one type of indicator and I'll see that whether that is acidic or basic. So that substance I will use ना, that will be indicator. मतलब वो indicate करेगा that this is basic, this is acidic or neutral. क्या है, acid basic है कि salt है, क्या है. For that we will use indicator. Indicator का काम ही होता है indicate करना. You know, when you drive bike, side light करते हैं, that is indicator. So that one type of indicator which indicates the proper situation. So here what we need to indicate, the substance is acidic, basic or salt. What is the nature of that substance? So for that we are using what is the nature of any solution, okay, or any substance. So for that we use one special type of substance, that is indicator, which will indicate acid और basic nature उसका है, वो indicate करेगा. Indicators change their color. अभी इंडिकेटर कैसा होता है, कैसे हम इंडिकेट करेंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा. When added to solution containing an acidic or basic, any substance you will take and you will add that this indicator, then it will change in color. Turmeric, litmus, china rose petal, means gudal, etc. are some of the natural occurring indicator. Means these are natural indicator. इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं. एसिड भी दो टाइप के होते हैं ना. लेमन जूस है वो नेचुरल एसिड है, इट कंटेन्स नेचुरल एसिड्स, राइट? सो हियर ऑल्सो लाइक दैट. सो सोल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल. लिटमस पेपर भी लाइकेन से बनता है. लाइकेन इज वन टाइप ऑफ प्लांट. सो लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल, these are some naturally occurring indicator. naturally मतलब नेचर में मिलते हैं हमें, वो इंडिकेटर हमें बनाने नहीं पड़ते by using other chemical. these all are not chemical indicator. understood? so they are naturally occurring indicator. कि आप यूज़ करोगे टर्मरिक को एसिड बेस में तो उसका कलर चेंज होगा, that is naturally. turmeric is one type of natural substance. litmus paper is also one type of natural substance. china rose flower, natural. understood? So this all were about acid, acidic nature, basic nature, sour taste, acidic, bitter or soppy on touching. You feel soppy on touching, that is basic. What are indicators? Special type of substance है, किसके लिए यूज़ होते हैं, which indicate, that is indicator. and indicator में natural है turmeric, litmus, china rose petal. these are naturally occurring indicators and this you are going to fill. understood? So this all were for today. Introduction already I had sent link, but then again I explained you. understood? So this is your homework and tomorrow we are going to see litmus, a natural dye, and some name of acids, नेम ऑफ बेस, ये सब केमिकल नेम है तो आपको याद रखना पड़ेगा. एंड वेयर दे फाउंड, विनेगर के अंदर एसिड होता है बट वो एसिड का नाम अलग होता है. सब जगह पे एक ही एसिड नहीं होता है ना, मैनी एसिड्स आर देयर. सो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड. सो लाइकवाइज यू विल रीड दिस कि कर्ड, आप कर्ड खाते हो तो यू कैन आस्क टू एनी वन दैट यू नो व्हाट कर्ड कंटेन्स
What is the name of acid which we find in curd, right? So that is lactic acid. नेम ऑफ एसिड फाउंड इन कर्ड, तो दैट इज लैक्टिक एसिड. स्पिनच, आंवला में कौन सा एसिड होगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड. सो दिस एवरी थिंग आई विल टेल यू विथ प्रोनाउंसिएशन. अंडरस्टूड? टिल दैट you write this acidic nature, basic in nature, and this definition, this you will do in your textbook. Okay, so this is your homework, so you'll have to go through this, and we will meet tomorrow. Thank you.